Hello everyone. I think all of you listening my voice. It's Sir, can you please use a background provided to you by BGU? I can use it, but if I use the background, I have then you have the not clear vision, sir. I am just giving a demo for that one. Okay, you can try it. I had tried earlier, but It's okay, sir. You can continue then. so that on the basis of You are demo. you are audible, sir. You can continue then. Uh, I applied the background, sir, but on applying, I feel that visibility was not clear at that time, It's so I okay. remove. No problem, sir. Okay. Hello. Yes, everyone. I am Dr. Sunil Kumar Srivastav, and today in this our live lectures, I am going to discuss with you the program name BCA, subject Basic Mathematics. And today is our unit number 3 topic we are going to discuss here. Earlier, unit number 2 have discussed with you the concept of the matrices, kinds of the matrices. Here in this topic, in this live lessons, I am going to discuss with you the related topics of the matrices, and most important topic is that is the adjoint of a matrix and inverse of a matrices. There are two things of here: inverse of a matrices and adjoint of the matrices. So before going to start this session in deep, we have to first come across the some guidelines. What is the guidelines? We are already familiar with this one. So this is the maintain. You have to maintain the discipline for a smooth conduction of the interactive live sessions. You have to type your name, your enrollment number, and the program name in the chat box to mark your attendance. Raise your questions only at the completion of the sessions. Avoid posting any irrelevant questions. Do not start any personal conversations. Interaction with the faculty should be constructive and no disruptive comment is appreciated. And finally, if have any issues, any queries, you can contact on the given academic supports number or you can make your queries on that one. So these are the guidelines we have to follow during the sessions. Now, we have to come across the points. What is the learning objective of these sessions? What is the learning objective of these sessions? You will be able to understand here. You will be able to understand. First of all, what is the perform of the joint of a matrix? You will be able to understand the concept of the inverse of the matrix. Important properties related to the inverse of the matrix. Rank of the matrices. Eigenvalues of a matrices. Eigenvectors. Cramer's rules for the linear equations. So these are the subtopics related to these topics, and we are going to discuss these topics in detail here. First of all, we have to know what is the definition of a joint of a matrix. What is the joint of a matrix? The joint of a matrix is the transpose of the cofactors of the matrix particularly formed by the given matrix. Suppose we have a matrix A. Suppose you have any matrix A, and we have find a matrix B by taking the cofactors of each element of the matrix of A, and we then take the transpose of this matrix, then this matrix will be known as the adjoint of the given matrix. So we written here adjoint of a matrix A is equal to cofactor matrix of A and transpose of that ones. We denote the adjoint of a matrix A as that A, D, J adjoint of A. This is the adjoint of a matrix. Adjoint of the matrix. This is the matrix A and this is the matrix B. Matrix B is that matrix which is formed by taking the cofactors of each element of the matrix A and taking the transpose of that ones. So in this session, we have to learn how to find out the cofactors of the each element of the matrices, how to find the transpose, and how to finally we conclude the joint of the given matrix. For example, we have taken here some uh, example here.
So we have taken example here, general form, that we have a matrix A. We are written here. Matrix have a 3 by 3 matrix. This is a 3 by 3 matrix because we have the 3 rows and 3 columns. Then order of this matrix is the 3 by 3 here. And all of we have the elements. First element, this is second element, third, fourth, and so on. A11 means already familiar the concept location of the elements in the matrix. The A11 means location of the elements in first row and the first column, first row and the second row is the column. This is the in the same like A22 second row and second column in this way. This is the matrix. First of all, we have to find out its determinant value. Already discussed with you how to calculate the determinant value. The determinant is given by this one. Suppose we have find a cofactor matrix of this one. So for the elements A11, the cofactor is the capital A11. For the element A12, cofactor is denoted by A capital A12 and A13 and so on. So for all the elements, we have find a cofactor elements and taking the transpose of this one, this will give the joint of the given matrix. How to calculate and how to find out the cofactors, we have to come across the points in our learning forms. How to calculate? First, see here. Suppose we have given a matrix A here. I will also given that in the form of, that is the A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. This is the matrix given. And we have to find that cofactors of the matrix. How to find? So we have to write like that. Cofactor of element for talking about just one. Suppose we're going to talking about A11. It will be denoted by capital A11. How to find the value? Minus 1 raised to power I plus j minus of that one. Minus of the matrix A. Minus of matrix A that is denoted by capital M11. What is the meaning of the I means? Number of in which row and j means in which column. The A11 means first row and first column. It will give the minus 1 raised to power 1 plus 1. Okay, clear? And what is the value of M11? How to calculate? How to see this one? We have to do it like that. First of all, we are going to find the cofactors of this element. We have to remove that row in which it lie, and we have to remove that column in which it lie. So after removing this one, we have find this A22, A23 like that. The determinant of this one, that is the A22, A23, A32, and the A33. And after solving this one, that is minus 1 is to power of 2, this is a plus 1. So we have to multiply this, that is the A22 into A33 minus of A32 into A23. So this is the value. This is the form. In the same way, if we are going to calculate any part, suppose going to value of A12. So A12, what I have to do in this case? In which row it lie, we have to remove. In which column it have to remove. So this is the A21 into A33. A21 into A33 minus of A31, A23. That's it. And but it is lie in the first position, first row, but in the second column. So minus 1 is to power of 3, that is the minus sign. This value is given a minus sign of this one. So in this way, for each and every element, we can find out the cofactor of this one. If anyone have doubt regarding this, you can ask, because we have to do the same repetition for all the other elements. We have to do all the same repetition for all the other elements, like 8 to 1. Again, we have to retain here values like that. Suppose we have given A is equal to here, same sequence, that is the A11, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. That's it. So we have to go like that. What have to do in this contest? What have we are going to find the value of A21, suppose. Cofactors of the element A21. What I've written here? Cofactor of element
A21, denoted by capital A21. How to calculate minus 1 raised to power? First of all, in which row? Second row and column first. And after we have to see in which row, it which column it lie, we have to release that. It lie in the second row and it lie in the first column. Remove this one, A22 into A33, A22, A23, A32 and the A33. And solve this one, that is the minus sign, and value is the A22, 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 no, sorry, A21, A12, sorry, this is an A12, A12. The A12 into A33 minus of A23 into A3. This is the value of that. In this way, we can find out the value of this one. So for each and every element, in this way, you can compute the value, cofactors of each and every element. For every element, suppose we have the matrix of 3 by 3. For all this, we have to find out the value of this one for all. So I think you understand. You have to calculate each and for each and every element. You have to find out the cofactors of each and every elements. In this way, we can calculate the cofactors of each and every elements. In the same sequence, you can also find out the cofactors of the element A31, because A31 is lie in the elements in the row third and column first, minus 1 is to power of 31. And we have to value of this one. The cofactors of A31, cofactors of A32, and cofactors of A33. So for each and every element, we have to find a matrix. Suppose you find the cofactors matrix of this one, that denoted by A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. This is the cofactors matrix formed by the cofactors of each element. And if you take the transpose of this one, this will give the determinant of the given matrices. This will give the determinants related to the determinants. Okay. Now moving forward, just by the definition, we have the conclude here. The transpose of the matrix is the cofactors of the coordinate adjoint of matrix written in the form. The joint of the matrix formed by the cofactors of each and every element, and taking the transpose of this one. We have the definition of this one in this regard. For any matrix A, the joint is denoted by ADJ, joint of the matrix, and which is the cofactors elements matrix and our transpose of this one. This is the definition like that. Again, we have some property written in the form of note. The product of a matrix A and its adjoint is equal to the unit matrix multiplied by the determinant of the matrix A. Suppose we have a matrix A and we multiply the matrix by adjoint of the given matrix, adjoint of A is equal to, we find the determinants multiplied by the identity matrix. Identity matrix, that is the unit matrix. That is the unit matrix. Now, if we have understand the concept of the adjoint of a matrix, we can next conclude the concept of the inverse of a matrix. That is the most important part. Inverse of a matrix. Simple definition is that suppose we have a matrix A, another matrix B,
then we say A is the known, B is the inverse of the matrix A if the product of all this one change to the identity. If the product of both matrices is converted to the identity matrix are the same order. Means is that diagonal will be 1 and other elements will be 0 in that form. This is the form of the identity matrix. So if we have the condition, one matrix is said to be the matrix of, if A matrix A and the other matrix is B, then one matrix is said to be inverse of the matrix in such way that their product is converted is to identity. Then one matrix is called the inverse of the other matrix. When A is called the inverse of B and B is called the inverse of A. And denoted as matrix of A inverse is denoted by A inverse. That's it. The condition for a square matrix A to possess an inverse is that A's matrix is the non-singular. Non-singular matrix, any matrix A, suppose we have matrix A, 1, 2, 0, 4, is said to be non-singular if its determinant value, that is the 4 minus 0 is equal to 4, is not equal to 0. The determinant value is not equal to 0, then matrix is said to be the non-singular. If the determinant value is going to be equal to 0, the matrix is said to be the singular matrix. Then matrix is said to be the singular matrices. I think all of you understand what is the inverse of the matrix and the most important formula, how to calculate the inverse of the matrix. The matrix inverse formula is given by here. That is denoted by A inverse. Inverse of the matrix A denoted by adjoint of A, adjoint of the matrix A, divide by the determinant of the matrix A. If the determinant of a matrix is the singular, a matrix should be the non-singular. The inverse of the matrix exists only, then the matrix would be the non-singular. So we have the formula here, inverse of the matrix A is equal to 1 upon determinant and adjoint of the given matrices. This is the concept of the inverse of the matrix, and we can use the topic to find out the inverse and other things related to that. ठीक है, हम हिंदी में भी कभी कभी बोल दिया करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू टॉकिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, इसके लिए दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर गोइंग टू बी कन्वर्ट इन आइडेंटिटी, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाता है। दैट्स इट द कॉन्सेप्ट। So we have defined here in the terms of their inverse matrix. फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो होता है ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर्स लेना है। उस कोफैक्टर्स एलिमेंट्स को हमें क्या करना, ट्रांसपोज लेना है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का कोफ एडजॉइंट एक होगा। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपको जानते हैं, तो दोनों फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो इन दैट केस यू कैन कंक्लूड द value of the inverse of the given matrix. When we go on the live examples, there should be so easy to understand the concepts. Now we have to some important properties here. So there is some important properties we have to discuss here. That's it. First property है, if A is non-singular. Non-singular means determinant value is not equal to 0. That's it. तो if is non-singular matrix, the inverse of the matrix inverse is equal to the given matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले या फिर उसका इनवर्स निकाले तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में आपके। व्हाट इज द इनवर्सल रूल कहते हैं, दैट इज द रिवर्सल प्रॉपर्टी। ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा इनके इनवर्स के रिवर्स ऑर्डर में होगा। बी इनवर्स इंटू A inverse, that is reverse order इसको कहते हैं। If A is the non-singular matrices, then transpose inverse जो होगा A inverse transpose के इक्वल हो जाएगा। एंड सेम सीक्वेंस में मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का अपने को मिलता है। दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स रिलेटेड।
तो if A is any matrices, A inverse या फिर inverses, then A into A inverse is equal to identity. If A is a non-similar matrices, then A inverse transpose is equal to A inverse transpose of that matrix. These are some basics related topics. Now next, inverse matrix method. What is the topic here? That is inverse matrix method. We are going to topic inverse of a matrix and how to going to solve these problems related to this one. So we have to term some conditions here. Okay. Also, we have the taken example here to describe all the things in the terms of the related terminology. First of all, we have the question number 2. We have to find the inverse of this matrix. The matrix is given by 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 to 9. This is the matrix, and this matrix is ordered as a 3 by 3. All of you is clear. Before find out the inverse of a matrix, हमें क्या करना है? We have to check its determinant value. If determinant of A is equal to 0, inverse not exist. Inverse not exist. So first of all, to exist of existence of a inverse of a matrix should be the non-zero. So first of all, we have to compute the value of determinant value. So first of all, we have to find the determinant of A, and it can be written in the form that is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 to 9. This is the matrix. And how to conclude it? We have to expand it in row-wise. We are going to row-wise expansion like that. So we have to take 1 in which first row lie, in second first column is light. So we have to, what have to do? This is have to do 1 into, we have to just written 1 into this one. Have to do 9 into 5, that is the 45, minus 6 into 2, that is the 12. Okay. And next, after that, we have to sign is plus, sign is minus. We written the sign is the minus, value is at 2, we written at 2. What have to do? In which row it lie, in which column it's lie. Remaining elements are 9 into 4, that is the 36. 9 into 4, 36 हो गया. और minus करेंगे 7 into 6, that is 7 into 6, that is the 42. And lastly, finally, we have the sign of third element is a plus 3. So here we have to take in plus. And what have to do? किस रो में राइट करता है, किस कॉलम में इसको रिलीव करना है, जो बचे उस एलिमेंट को सॉल्व करना है. तो दिस इज द 4 into 2, that is the 8, minus 7 into 5 is equal to 35. And after simplification, the value is equal to the here minus of 36. So what is the meaning? The determinant value of the matrix is equal to minus 36 and is not equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि matrix is the non-singular and inverse of the matrix is going to be exact here. Inverse of the matrix is going to be exact here. That is the concept behind that one. So in this way we can conclude the first step is our clear. हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. अब हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट्स. ओके, तो हम यहाँ पे एक बार इस मैट्रिक्स को फिर से लिख लेते हैं. यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है ए इज इक्वल टू गिवन है, दैट इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 4, 5, 6 and 7 to 9. That is the 7 to 9. That is the 7 to 9. Third one is 7 to 9. This is the clear. Okay. Now we have taken all the, we have the 9 elements here, A11, A12, A13. The first is that we have to find the cofactors of the element A11. That is the A11. This is the for the A11. This is the element of A11. So we have written the cofactors element A1 denoted by the capital A11. What I have to check? किस रो में और किस कॉलम में एलिमेंट लाई करता है,
दिस इज द माइनस वन रेज टू पावर नम रोज एंड कॉलम लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, जैसे वन प्लस वन। तो ये रिटर्न हुए माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन। ओके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जिस रो जिस कॉलम है उसको हमें क्या करना है, इस तरीके से इरेज कर दीजिए। बचा क्या आपका, ये एलिमेंट आपका बच रहा है। वी हैव जस्ट रिटन हियर। ओके। एंड फाइंड द वैल्यू माइनस वन रेज टू पावर ऑफ टू इंटू नाइन इंटू फाइव 45 माइनस दैट इज इक्वल टू 33। The cofactors of the element is A11 is equal to 33. In the same sequence, we have to find out all the values, all the cofactors of the each and every element. For each and every element, we have to find out the cofactors for each and every elements here. What I have to do here? First of all, we are going to talk about the A12. That is the A12. A12 lie in the first row, but in the second column. The value is minus 1 is to power 1 into 3. A12 के लिए क्या करना है, ये फर्स्ट रो में ही लाई कर रहा है, बट कॉलम अब हो गया हमारा सेकंड हो गया। ये कॉलम हमारा सेकंड हो गया। ये हो गया। ये बचा, देखो 4 बच रहा है, ये 6 बच रहा है, ये 7 बच रहा है, और ये हमारा 9 बच रहा है। 4 6 7 9। और हम इसकी वैल्यू को इवेलुएट कर लेना है। 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू 4 42। आंसर हो गया हमारा 6। इसी तरीके से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो निकालना चाहते हैं इस एलिमेंट की, टू वाले एलिमेंट की निकालना चाहते हैं, इसकी निकालिए। कौन सा है, 3 2 है। ये कौन सा एलिमेंट है, A32 है। A32 के लिए क्या करना, माइनस वन रेस्ट पावर 3 + 2। फिर हमें क्या देखना है, ये किस रो में और किस कॉलम में है, इसको हटा दीजिए ऐसे। बचा क्या, देखो ये 1 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, और यहाँ पे ये 6 बच रहा है। देखो यहाँ पे आ गया 1 3 4 6, वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो हम किसी भी की वैल्यू को निकालना चाहे, को फैक्टर A32 अगर हम करना चाह रहे हैं, तो हमें सेम सीक्वेंस में ऐसे ही जाना है। माइनस वन रेज टू पावर ऑफ, किस रो में लाई करता है, किस कॉलम में लाई करता है। तो यहाँ पे ये थर्ड रो में लाई कर रहा था, ये थर्ड होगा 3, और कॉलम था हमारा सेकंड, तो माइनस वन रेज टू पावर ऑफ 2 हो गया। फिर कौन सा एलिमेंट बच रहा है, तो 1 3 4 6 बच रहा है। तो मिलकर 1 3 4 6। और इसी को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 3 हो गया 12। 4 इंटू 3 हो गया 12। 4 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 12। तो इसका आंसर हम निकालते हैं, तो दैट इज माइनस 6 + 12, मतलब ये हो जाएगा 6 12 आ गया। और ये आंसर है। तो आई थिंक आप इस सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स वन बाय वन आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आपको निकालने, और आप इस तरीके से कंक्लूजन कर सकते हैं। ये सारी बात अपने को याद होनी चाहिए। ये 36 37, और इससे हमें क्या लेना है, इसको लेकर के हमें मैट्रिक्स बनाना है। सपोज ये मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, दैट इज द ए बना रहे हैं, और इसको लेकर के हमें मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स बनाना है ना। देखो A11 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 33 है। A12 दैट इज द 6। A13 यहाँ पे है माइनस का 27। A21 कितना है, दैट इज द -12। A22 कितना है, माइनस का 12। A23 कितना है, दैट इज द प्लस का 12। A31 कितना है, माइनस का 3, दैट इज द 6, एंड दैट इज द माइनस का 3। एक ये मैट्रिक्स बन गया बाई टेकिंग द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। और इसका मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज अगर लेते हैं, तो यही मैट्रिक्स हमारा हो जाता है ज्वाइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ज्वाइंट ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स जो हमारा रो होता है उसको हम कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम में क्रिएट कर देते हैं, और जो कॉलम होता है उसको रो में लिख देते हैं। तो रो को कॉलम में लिख के जो मैट्रिक्स बनाएंगे, वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, ज्वाइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द, याद रखेंगे कि हमें ज्वाइंट कैसे बनाया है। अगर ज्वाइंट बन गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो हम इनवर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम नेक्स्ट पार्ट में कंक्लूडेड है कि हाउ टू कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को लेकर के जो मैट्रिक्स हमने बनाई, दैट इज द 33 6 -27, और इसको हमने लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो हमने ये रो कॉलम रो लिखा है, मतलब कॉलम लिखा था, उसको हमने रो बना दिया। 33 -12 -12 ऐसे बन रहा है। फिर ये सेकेंड कॉलम,
ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ज्वाइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बन रहा है। सो इनवर्स क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू सबसे पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं एंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स लिखते हैं ये। तो एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमारा ये है जो हमने ये बनाया है ये वाला, और एक कोफैक्टर्स की वैल्यू 1 अपॉन क्या है हमारी 36 आ रही थी माइनस में, तो ये हमारी दैट्स वैल्यू। और इस एलिमेंट से हम क्या करें, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब हम किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट सब फॉर दैट। सो मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी सिंप्लीफिकेशन बनेगा वही हमारा क्या है आंसर है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द इवन मैट्रिसेस। दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू दैट। So we have taken an example to describe with you what is the uh, how to calculate the adjoint and how to calculate the inverse of the given matrices. So this is the inverse matrices method we are going to discuss with you here in detail. Method 1. One of the most important method of finding the matrix of inverse involving the finding the minors and cofactors of the elements, and observe we to understand this method clearly. This is the method we are going to discuss inverse of the matrix 1 upon determinant of A and adjoint of the given matrices. Just we have to discuss with you. दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड क्या कहता है, दैट इज द सेकेंड मेथड टू फाइंडिंग दिस वन, तो फाइंडिंग एन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये ऐसे हमने कोई लिख दिया मैट्रिक्स, ये 1 2 4 2 6 8 एंड 2 9 0। तो हम इसमें तीन चीजें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखो ये रो वन होता है फर्स्ट रो, इसको कहते हैं हम सेकेंड रो, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड रो, और ये होता है हमारा कॉलम फर्स्ट, ये होता है हमारा कॉलम सेकेंड, और ये होता है हमारा कॉलम थर्ड। तो किसी भी दो रो या दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो की जगह पर सेकेंड आ जाए, सेकेंड रो की जगह पर फर्स्ट आ जाए, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज इन कॉमन। ओके, दूसरा कॉलम ये कहता, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट्स इन एनी रो एंड कॉलम इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिसेस। और तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी रो या कॉलम में हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी अदर रो एंड कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा तीन रूल होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे, और इसी बेसिस पे हम अगर कोई रूल इनवर्स निकालने जाते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द इनवर्स बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके लिए हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड इनवर्स एग्जिस्ट, सो वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म, ए इज इक्वल टू आई टर्न टू दिस वन, वी अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिस मैट्रिक्स to make it identity and convert finally in the form of this one, I equal to BA, and finally this B is known as the inverse of the given matrix. So write the matrix in this form. Apply the sequence of row operations to tell get identity matrix on the left hand side, and use the same elementary transformation on the right hand side to get the transformation of this one. So matrix B on the right hand side will be inverse of the given matrices. Will be inverse of the given matrices. Will be inverse of the given matrices. I think you all of you understand this one. Okay. इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या करना है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए by the use of elementary transformation. So we have a taken matrix A is here, written here A is equal to, that is the matrix 2 1 7 4. This is the matrix, and we have to find the inverse. First of all, we have to not check this
singular or non-singularity of the given matrix, because we are not going to apply the concept of here adjoint of matrix topic. तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है कि मैट्रिक्स जो हमारा ये होता है, ए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ऐसे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये होता है सेकंड मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द सेम ऑर्डर दिस वन। और ये हमारा लिखा हुआ मैट्रिक्स है 2 1 7 4, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से हमें क्या करना है, उसको मैट्रिक्स को लिखना है ऐसे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखना है, और उसी ऑर्डर का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखा है वो लिखना है। तो उससे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये, इसलिए हमें 2 बाई 2 की हमें यहाँ पे क्या लिखा है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखा। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना, मेन टारगेट अपना ये है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ना, ये वाला मैट्रिक्स क्या लिखा है यहाँ पे, 2 1 7 4 है, इस मैट्रिक्स पे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और इसको कन्वर्ट करके हमें ये बनाना है 1 0 0 1, ऐसा बनाना है। और ऐसा बनाएंगे तो राइट वाला इधर वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, अप्लाई होगा, चेंज होगा। और जैसे ही चेंज होके, जैसे ही आइडेंटिटी बना, तो जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी वही इसका इनवर्स हो जाए। ठीक है, तो हमें यही काम करना है। यहाँ पे देखो हमने लिखा पहला ऑपरेशन, पहला स्टेप हम क्या लेने जा रहे हैं कि R1 को चेंज, R1 का मतलब फर्स्ट रो, ये हमारा होता है फर्स्ट रो, इसको कहते हैं फर्स्ट। फर्स्ट में पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, इसको हमें क्या बनाना है भाई, एक बनाना है। तो 2 को एक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यही काम करा है कि फर्स्ट रो को हमने 2 से क्या करा, डिवाइड करा। ये 2 का हो गया 1, और 1 का हो गया 1/2, और इधर हो गया 1 का 1/2, ये 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। और इसमें कुछ हमने चेंज करा नहीं, तो पहली चीज ये हमारी ये बन गई। ठीक है, तो हमें क्या करना, पहला देखो हमें बनाना था 1, ये हमारा 1 कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप में, देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 बन गया। इट्स क्लियर, ओके। अब क्या करना है, देखो इसके 1 के नीचे एलिमेंट कितना है, ये क्या है, 0 बनना चाहिए। अब इसका मतलब हमें 7 को क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, 7 को 0 करना है। अब ये देखो ऊपर लिखा है 1, यहाँ लिखा है 7, अब इसको करना है हमें 0, तो क्या करेंगे, 7 माइनस, अगर ये भी 7 अगर हो जाता है तो हमसे क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस कर दो, तो 7 - 7 होकर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, R2 को बदलना है। कैसे बदलना है कि पहले हम R1 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके साथ इसको माइनस करेंगे, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। देखो R2 कितना है, 7 है, और माइनस R1 कितना है, 1, और 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 - 7 होकर कितना हो जाएगा, ये 0 हो रहा है। देखो ये एलिमेंट क्या हो गया हमारा, 0। वही कॉन्सेप्ट दूसरे के लिए भी करना है। यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 आ रहा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये भी 1/2, ये माइनस का 7/2, और ये 1 आ गया। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ये 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को क्या करना है, माइनस का 0 करना है, और इसको करना है अपने को 1। ये दो स्टेप और फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने R2 को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो R2 को चेंज करा, R2 को चेंज करा, 2 R2 से हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो ये 1 बन गया जो हमें चाहिए था। ये भी हमारा काम आसान हो गया। अब हमारे पास बच रहा है ले दे के एक यही एलिमेंट, जिसको हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, R1 में से R2 को हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई करके। तो ये वो देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये बन गया, राइट हैंड साइड इससे कोरस्पॉन्डिंग में ये बन गया। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है ना, ये इनवर्स ऑफ दिस वन है। इनवर्स का आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 1 7 का -2। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी हम आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के केसेस में। ठीक है, तो ये इनवर्स आ गया। अब हम प्राइमर्स रूल का यूज करने वाले हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द simultaneous equations. Suppose we having simultaneous equation of the variables in the form, जैसे इक्वेशन ऐसा लिखा हो, 3x + 2y = 6 लिखा है, 4x + 9y = मान लो 10 लिखा है। ऐसा इक्वेशन लिखा है जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 10th की क्लास में बहुत सारे मेथड्स रीड कर रहे होंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करा होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड का भी यूज करके इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले का नाम है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल इज ए मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो इसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन होता है हमारे पास, जो हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है ये, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक मैट्रिक्स ए बनता है, इंटू मैट्रिक्स का नोन्स बनता है, और सम कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स बी बनता है, लिखा ना, ये मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ए का मतलब
जो भी ये कोफिशिएंट लिखे हैं ना, इनको लेकर के जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना 3x2 3 2 4 9, तो जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे ना ए ऐसे लिखेंगे 3 2 4 9, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं, इसमें कितने वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल हो गए, ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गया। और जो बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, मतलब 6 और 10 हो गया। आपने ये 11th या 10th में पढ़ा भी होगा ऐसा कुछ, तो समझ में भी आ रहा होगा, तो 6 और 10 होगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। दिस इज द रूल to write the simultaneous equation, the matrix equation form ax is equal to b notations. That is the ax is equal to, okay, how to solve, कैसे आंसर कैसे निकलेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैट्रिक्स को हम ए, तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स अब हमारा कांस्टेंट है, ये लिख दिया। एंड कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट ए वन ए टू और ए एन, ऐसे में निकालना है। ए वन निकालने के लिए हमें क्या करना भाई, फर्स्ट कॉलम जो ए में है उसको रिप्लेस कर दीजिए बी से, मतलब ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना आपको, ये अगर हमें ए वन की वैल्यू निकालनी है कैपिटल ए वन की, तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स तो यही रहेगा ए वन, इस बाकी सारे सब यही रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसके जगह पे ये फर्स्ट दिख रहा है ना, इसके जगह पे हम ये वाला कॉलम मैट्रिक्स इसको लिख, उसी तरीके से हमें ए टू निकालना, तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे रख देंगे, ए थ्री निकालना तो थर्ड वाले को रख देंगे, और उसके डिटरमिनेंट वाले वैल्यू से क्या करेंगे, हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ऑल दी वेरिएबल्स यू कैन फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ दिस वन। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, टू वेरिएबल्स का सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज द 2x + 3y इज इक्वल टू 8 एंड 5x + 4y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाना होता है। जो देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया 2 3। दूसरे वाले में 5 और 4 लिखा हुआ, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स क्या हो गया, ये एक्स और वाई में इक्वेशन है, ये एक्स और वाई हो गया। और मैट्रिक्स ऑफ कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, ये लास्ट में लिखा हुआ 8 और 9 ऐसे। तो इस तरीके से हम ए एक्स बी निकाल सकते हैं। और ये पूरा इक्वेशन जो हमारा है ए एक्स इज इक्वल टू ये बी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ। तो ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। अगर हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वन अपॉन डिटर्मिनेंट है पे लिखना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा भाई, इसका इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 - 15 मतलब -7 आ जाएगा, ठीक है। और ए वन कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या करना है अपने को, ए वन निकालने के लिए जो ए की जो वैल्यू दिख रहा है ना ए, इसमें हम इसके कॉल इस वाले कॉलम की जगह पे हम ये बी रख देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 8 9 3 4, ये हमारा हो गया ए वन अपॉन ए का मतलब हो गया -7। तो अब ये 8 × 5, 8 × 4 कितना, 32 -27 अपॉन -7, तो -5/7, सॉरी 5/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये आंसर आ रहा है ना आपका, डिटरमिनेंट वैल्यू जो अपने पास है इसकी, वो अपने पास आ रही है -7। और ए वन के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट वाले कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया 8 और 9 से, इसकी वैल्यू निकाला, देखो आ रहा है 5। तो आंसर जो निकाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन की बात हो रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन, ये हमने निकाला कैसे, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए और बाकी को ऐसे रहने दीजिए, और उसका आंसर निकालेंगे, आ गया 5। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। एक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, देखो लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो आ गया -5/7। और ए टू निकालना हो तो क्या करेंगे, ए टू के लिए ये फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा, सेकेंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी से, ये देखो 8 और 9, ये हो गया ए टू, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, देखो 22 आ रहा है, और 7 तो अपने पास सही है, तो आंसर अपना हो गया 22/7। तो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू, इस तरीके से हम वाई की वैल्यू बाय द यूज ऑफ द क्रैमर रूल कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी वे में हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स जुड़े हैं, इसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब भी क्या है, ये भी समझ लें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly dependent columns of a matrix is called the rank of the matrix। इसके लिए सिंपल सा डेफिनेशन है कि नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट हैज
एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ दैट ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है और उसके अगर हम कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा टू है, तो सेकेंड ऑर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स मैट्रिक्स होना है, माइनस होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हम उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। अब रैंक के बेसिस पे विदाउट सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम बता सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन और नॉट। इट इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? इट विल बी यूनिक सॉल्यूशन, yeah, it will be the many solutions, it will be the no solution case. So we can decide in that form. So rank of the null matrix is always zero. कोई अगर null matrix का मतलब क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर क्लियरली कट है, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका रैंक अगर आपको दिखना है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसे नोट करते हैं, रो ए पढ़ते हैं, उसको कहते हैं रो ए। रो ए, आर एच ओ, रो, रो ऑफ द मैट्रिक्स। रो ए मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो टू फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू द इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, इसको डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो लगभग सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ज्यादा नंबर जितने जिस जो में सबसे ज्यादा जीरो होंगे वो सबसे नीचे होगा, उससे ऊपर कम वाले जीरो, उससे ऊपर कम वाले जीरो। जैसे एग्जांपल ऐसे तौर पर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसा, जैसे 1 2 4 0 2 0 एंड 0 0 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखेंगे ये लीडिंग डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे फॉर्मेट को हम कहते हैं इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म। और अगर कोई मैट्रिक्स हमारे इकोलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब नंबर ऑफ नॉन जीरो को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये कुछ चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो एक रो तो पूरी की पूरी जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो। इस तरह के मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू सब दो होनी चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फॉर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, कंसीडर द एग्जांपल्स हियर। 2 3 5 4 6 10. While we are observing the rows, we can see the second row is the two times of the first row. यानी जो सेकेंड रो जो लिखा हुआ है, फर्स्ट का क्या लिखा है, टू टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनको दो नहीं, हम एक काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको माइनस करें, दो की रो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे हम इसको वैसे ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 3 5, और उसको हम अगर चेंज करना है, R2 - R1 कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या मिला, एक रो पूरी जीरो हो गई, एक रो जो आपकी नॉन जीरो हो गई। तो एक ही रो आपकी नॉन जीरो है ना यहाँ पे, इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इसलिए जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, देखो इसका फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है, और थर्ड रो भी आपका नॉन जीरो। इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो है, तब कोई जीरो जीरो काउंट होता है। उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो है, तो वो नॉन जीरो ही काउंट होता है। इसलिए देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऐसा लिख रहा है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू ऐसे 1 0 0 1। ये देखो, ये फर्स्ट रो भी नॉन जीरो, ये भी सेकंड रो भी आपका नॉन जीरो, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसकी रैंक कितनी है, थ्री हो गई। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बाय शोइंग द इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द मैट्रिक्स ऑफ दैट वन। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे आप लिखा एग्जाम्पल में हमने देखा यहाँ पे, हमने बात करी। एक एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 2 3 4 3 5 7, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। हाउ टू फॉर्म, तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जाना है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होना चाहिए भाई साहब, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास वन होना चाहिए, देखो वन है। फिर उसके बाद इस लीडिंग डायगोनल को देख लो ऐसे, है ना। सबसे पहले इसके नीचे का जो भी एलिमेंट है, देखो टू दिख रहा है, थ्री है, दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसी अप्लाई करा है। एक जीरो, ये दो और तीन दोनों क्या होते हैं, जीरो हो जाए। तो एक हमने R2 लगाया, R2 - 2 R1 करा, 2 - 2 का देखो जीरो बन रहा है ये। उसी तरीके से थ्री है, 3 - R1 करा, तब भी हमारे जीरो बन रहा है। तो सेकेंड रो में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा, और ये पूरी की पूरी एलिमेंट हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। सेकेंड रो में क्या करेंगे हम, इस जो एलिमेंट है, ये सेकंड जो -1, इसको हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। और उसके बाद हम इस एलिमेंट को -1 को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट वाले एलिमेंट को हम वन करेंगे या जीरो करेंगे। तो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं कि हम क्या एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने करा यहाँ पे, देखो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करी,
तो उस मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है, देखो यहाँ दिख रहा है लीडिंग डायगोनल, इस डायगोनल का देखो ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए आपके, और ये भी आपका जीरो हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि इसके एक रो तो ये जीरो रो हो गया, ये हो गया जीरो रो हो गया, और ये हो गया हमारा नॉन जीरो रो, नॉन, और ये भी हो गया नॉन जीरो रो। तो दो नॉन जीरो रो हो गए और एक आपका जीरो रो हो गया। इसका मतलब इसका रैंक कितना हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब रैंक हो गया दो, रैंक इसकी हो गई दो। तो number of non-zero rows and number of non-matrices you can conclude in like that. So non-zero and zero rows. उसी तरीके से मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशंस होते हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, तो इन्हीं मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वन, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्मेट में, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्मेट में अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं ये वाला, और इसके हम सॉल्यूशन का इसका नॉन जीरो एक्स इस इक्वेशन के लिए मैंने एक्स की कोई भी एक पेयर वैल्यू ऐसा निकालते हैं जिसके लिए नॉन जीरो सोल्यूशन अपने को मिल रहा हो, तो वो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वेक्टर का नाम होता है, और वो वेक्टर होता है आइगन वेक्टर्स। Roots of the characteristic equation is known as the eigenvalues, and sorry, eigenvalues, and corresponding to each eigenvalue we have a value vectors, that one is known as the eigenvectors। तो इस तरीके से हम इन बदली वाली प्रॉपर्टीज का भी हम यूज करके इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिटेल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एज फॉलो। क्या क्या करना है, सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, lambda be the any eigenvalues for associated with this, then eigenvectors can be defined in the form of non-zero solution of the matrix equation a minus lambda I x is equal to जीरो। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का नॉन जीरो सोल्यूशन अपने को चाहिए, और जो भी नॉन जीरो सोल्यूशन x के फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में x1 x2 x3, यही हमारा उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा, आइगन वेक्टर्स होता है। दैट इज द आइगन वेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ चॉइस। तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाले टॉपिक को भी कंप्लीट किया जा सकता है। देखिए वैसे लिखा हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इन्होंने डाली है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द इक्वेशंस, determinants of the equations a minus lambda I, determinants of the equation determinant of a minus lambda I, and I is equivalent to the identity matrix of this one. Substitute the value of lambda for this matrix equation and find its non-zero solution, one non-zero solution of that one. Simple topic है, non-zero solution of that। कैसे कैलकुलेट करना देख लेते हैं एक बार। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी 2 by 2 की मैट्रिक्सेस है, तो सबसे पहले में क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। कैसे करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा का मतलब ये 1 है तो 1 माइनस लेम्डा हो जाएगा, ये 4 है तो 4 एज इट रहेगा, ये -4 है तो -4 ही रहेगा, ये 7 है तो -7 माइनस से 4 हो जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। और इसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, और इक्वेशन से सॉल्व करा तो लेम्डा की दो वैल्यूज आ गई, -3 -3। ये जो वैल्यूज होता है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं इसको, आइगन वैल्यूज कहते हैं, इसको कहते हैं आइगन वैल्यूज। ये हम कहते हैं आइगन वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ आइगन। और इसी वैल्यू आइगन वैल्यू से कोरोस्पॉन्डिंग जितने वेक्टर्स मिलते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिखा और x इज इक्वल टू 3 के कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे हमने, x इज इक्वल टू 3 के कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिख रहे हैं, तो जो इसका सोल्यूशन मिल रहा है इस मैट्रिक्स इक्वेशन का, जो भी सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, जो लिखा ना यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब x इज इक्वल टू अगर हमने 1 ले लिया तो y की जगह पे क्या आएगा, -1 हो जाएगा, x की जगह पे हमने 2 लिया तो y की जगह पे क्या आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब 1 कामा -1, 2 कामा -2, 3 कामा -3, इस तरीके से these are all the corresponding vectors for this one। तो आइगन वेक्टर्स फॉर द सेम पर्टिकुलर वैल्यू मे बी द मोर देन, मतलब आप सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आइगन वेक्टर्स लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं अपन, और आपका आंसर मेरा आंसर सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, बिकॉज दे हैव नॉट द यूनिट, वी हैव द मल्टीपल चॉइस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना इक्वेशन यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 है तो उसको सेटिस्फाई करने से मैंने कहा जब एक्स बराबर कोई 3 लेगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -3 हो जाएगी, सॉरी 0 कर दो। इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि 3 का -3 भी आंसर सही है, 1 का -1 भी आंसर सही है, 2 का -2 भी आंसर सही है, सो मेरे आंसर आर देयर। हमें रेशियो बस उनका सेम नहीं मिलेगा, होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सारे आंसर को कैलकुलेट कंक्लूड कर सकते हैं। तो
आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम्स है आप इन्वर्स निकालने की, जिसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूजेस. So we finally conclude our lessons in the term of learning outcomes. In these sessions, we have discussed with you in details here. First of all, we have given the definition of adjoint of the matrices. We have also concluded the how to inverse of the matrix is defined and how to conclude the inverse of the matrices by the elementary transformation method as well as formula methods. Also discussed with the properties of inverse matrices, rank of the matrices, eigenvalues and eigenvectors of the matrices, and most important are the primal rules of the linear equations. These are our learning outcomes of these sessions. Any doubt from your side, you may raise your questions, you can ask and enjoy the sessions. Any question from your sides? Okay, no question. Most of you have. Okay. जिस एलिमेंट का भी हम कोफैक्टर्स बेटा निकालने वाले हैं ना, उस कोफैक्टर्स को हमें बस देखना है कि जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, बस एक ही रूल्स उसके लिए फॉलो करना है आपको. हमारा रूल होता है -1 का, तो हमें बस इतना ही देखना है कि वो किस पर्टिकुलर प्लेस पे है. अगर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है तो -1 का पावर रोज प्लस कॉलम करना है. फिर जिस रो और कॉलम में वो लिखा है ना एलिमेंट, आपको उसको क्या करना है, उसको इरेज करो, बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट बनाओ और उसकी वैल्यू निकालो. तो उस तरीके से हम कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, तो आंसर आपको जस्टिफाई हो जाएंगे उस केस में, कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना. सो थैंक यू टू वेरी मच. थैंक यू.